share my screen with you. Okay, so share and full screen. Achha. So quick overview. We started our first lecture last week. We studied, discussed some basic facts about measurement. Then we classified. screen नहीं आ रही. Achha, let me see. सर आ रही है. सर शो हो रही है. हो रही है. अच्छा, जिन स्टूडेंट ने भी कंप्लेन किया कि उन्हें स्क्रीन अब नजर आ रही है. Sometimes it takes a little longer to. सर अभी तक तो नहीं आई. अच्छा, I don't know. मैं दोबारा let me stop. सर रीजॉइन करवा लें स्टूडेंट को. सर इसने रीजॉइन करवा. अवैस आप इस तरह करो कि जो है ना कॉल से ऑफ होके फिर दोबारा ज्वाइन कर लो तो आप स्क्रीन आ जाएगी आपकी. थैंक यू मैं करता हूँ इस तरह. चलो अवैस आप कर लें. हम स्टार्ट करते हैं. अगर फिर भी इशू हो तो अवैस बता देंगे. So we started with some basic facts about measurement. और अगर आपको याद हो, we discussed that every instrument have some uncertainty. ठीक है, ये एक basic premise है instrumentation का. In the field of instrumentation, the first thing you need to understand whenever you take some measurement, no matter how accurate the instrument is, it will always have some uncertainty. ठीक है, so pretty much you can, this is a fact of life for an instrumentation engineer, that it will always have uncertainty. You cannot, in almost all the cases, you cannot get rid of uncertainty. आप uncertainty खत्म नहीं कर सकते. Yes, you can reduce uncertainty, you can quantify uncertainty, but you cannot completely remove uncertainty. इस बात की समझ आ रही स्टूडेंट्स? यानी ये चीज आप अपने दिमाग में रख लें. If you are not sure about that, you can discuss that with me right now. हम एक discussion कर सकते हैं कि सर हम इस तरीके से uncertainty को ख़त्म कर सकते हैं. What is my claim? My claim is, as a course instructor, that you cannot remove uncertainty from measurement. This is my claim. अगर आपको इस पे यकीन नहीं है, if you have counter argument, then I'll ask you to talk to me. मतलब मुझसे बातें करें. We can discuss कि किसी स्टूडेंट को इस बात से इशू है? Students? No sir. ठीक है. So if you agree with me that every instrument has uncertainty, ठीक है, then we, as an instrumentation engineer, we end up with a dilemma. Of course, we want accurate measurements, but at the same time, we know that any measurement that we take will have some uncertainty. If we use very accurate instruments, then the amount of uncertainty will be less, but it will not remove the uncertainty altogether. Of course, we can reduce the level of uncertainty to such a small extent that for all intent and purposes, that uncertainty may be ignored. But it means that we are only ignoring the uncertainty. It doesn't mean that the uncertainty doesn't exist. Okay? Now, once we know that there will always be uncertainty, the next step that we can do is quantify uncertainty to get an estimate of uncertainty. So we can we can get an idea of the amount of uncertainty that we will have in our readings, and based on that quantification of uncertainty, we can do a probabilistic design, engineering design that will take into account the uncertainty. ठीक है, कितने स्टूडेंट्स को अगर आपको याद होगा, देखें जैसे आप सब लोग फेमिलियर हैं जो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ
स्टील है. सो कोई मुझे बताएं कि व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, स्टूडेंट्स? The maximum strength of Just the as a plus to be जी condition, sir. जी. सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? कौन वैल्यू क्या है? एनीवन? स्टूडेंट्स? सर एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता सर, ये इसके बाद स्टील डिस्ट्रॉय होता है सर. ठीक है, लेकिन कुछ आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा ना कि इतने मेगा पास्कल, इतने सर 951 मेगा पास्कल. ये तो थोड़ा सा 951. अच्छा चलें हम एज्यूम करते हैं, वैसे यू कैन सर्च इट आउट. एज्यूम इज 60 a material, a steel grade that has a yield strength of 60 KSI. ठीक है. स्क्रीन सर पे ऑफ हो गई. हाँ वो मैंने खुद ऑफ किया. आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट ए न्यू लाइक something here. Just give me one moment. ओके सर. Okay, so let me close everything else and we will start the screen. Okay, so let's share the screen here with you. Share. अच्छा, अब आपको नजर आ रही है स्क्रीन? Yes sir. यस जी सर, सर. नजर आ रही है सर. यस सर. Yes sir. Okay, so what am I going to do is, just one moment please. Okay, we are fine here now. So coming back to the slide. So assume if we have a yield strength is Y is equal to 60 KSI. ठीक है. Now from the last lecture you should understand how do you measure yield strength of a material? What is the experimental procedure for measurement of yield strength, students? Sir UTM. Yes, we use UTM machine. ठीक है. So what do we do? How do we measure? For example, if you get a truckload of steel bars, ठीक है, जिसे हम आम ज़बान में सरिया कहते हैं. अगर आपको एक पूरा ट्रक सरिये का लोडेड एक ट्रक मिल जाए, तो इसमें मिसाल के तौर पे सरिये के बार जो हैं 1000 पीसेस हैं. Let's suppose there are 1000 pieces of steel bars. ठीक है. And let's suppose you're an instrumentation engineer in a company that just received 1000 steel bar pieces. ठीक है. और आपका मैनेजर आपसे कहता है कि ठीक है, आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हैं, वहाँ पे यूटीएम मशीन पड़ी हुई है, आप जाके मुझे बताएं कि ये जो हमने अभी बैच मंगवाया है 1 ट्रक लोड ऑफ स्टील बार्स, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ क्या है. ठीक है. अब आप कैसे करेंगे? एनी स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आदिल नोमान. जी आदिल. आदिल नोमान नहीं है. ठीक है, ये आदत अच्छी नहीं है ना. ये फिर मैं थोड़ी देर के लिए अपने सब लोग अपने कैमरे ऑन करें. आई वांट टू सी एवरीवन. स्टूडेंट्स जी. अच्छा, वजाहत खान भी हैं. ठीक है. अच्छा, ठीक, चले. अच्छा, ठीक है, आप काइंडली बंद कर दें. थैंक यू. So Amir Hamza, let me ask you that same question. Yes, How would you do it? सर ये इनमें से सर मुख्तलिफ हम जो हैं इसका ग्रुप वगैरह बना देंगे कि मुख्तलिफ इनमें ले लेंगे, मुख्तलिफ उसकी यूटीएम में मुख्तलिफ बार ले लेंगे. मतलब अगर 1000 है, इनमें से हम 20 के जैसे ग्रुप बना लेंगे तो उसमें मुख्तलिफ वैल्यू लेंगे और उसमें से
ठीक है, समथिंग लाइक दिस, यील्ड बार ऑफ स्टील, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, अब देखें हमारे पास अगर आप देखें यूटीएम जो है ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। एक टेस्टिंग हमारे पास होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होते हैं। यूटीएम में जो है अगर आप जिस स्टील बार का आप यील्ड स्ट्रेंथ मालूम करेंगे तो जाहिर है कि वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम 1000 के 1000 स्टील बार्स का probably हम नहीं करना चाहेंगे for two reasons. One, it would be very expensive and time consuming. Second, it will destroy the samples. ठीक है, तो wastage होगा. So what we will do, we will take a representative sample of the steel bars. तो हमारे पास 1000 बार हैं, 1000 बार में से हम randomly मिसाल के तौर पे 5 सैंपल्स ले लेंगे, 10 ले लेंगे, 20 ले लेंगे, तो हम 15-20 सैंपल्स ले लेंगे और वो 15-20 सैंपल्स जो हैं वी विल एज्यूम, चूंकि हम रैंडमली उस बैच में से लेंगे, सो हम कहेंगे कि इस 15-20 जो सैंपल्स हैं इनकी जो यील्ड स्ट्रेंथ वैल्यू आएगी वो यील्ड स्ट्रेंथ वैल्यू इस पूरे उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस पूरे बैच को रिप्रेजेंट करेगा। सो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं टेबल बना लूंगा। टेबल में मेरे पास 2 कॉलम्स होंगे। ठीक है, एक जो है मिसाल के तौर पे टेस्ट सैंपल नंबर, ठीक है, सैंपल नंबर हो जाएगा, और सेकंड जो है हमारे पास उसकी यील्ड स्ट्रेंथ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है मेरे पास आ जाता है 45 KSI, सेकंड जो है 49 KSI, थर्ड जो है 50.5 KSI, फोर्थ जो है 51.2 KSI, एंड अप टू 20th जो है हमारे पास आ जाएगा लेट्स सपोज 50.1 KSI। ठीक है, अब इस हमारे पास ये पूरा डेटा आ गया 20 सैंपल्स का। अब हमने इस, अगर आप देखें 20 सैंपल्स के अंदर कुछ वेरिएशन है। ठीक है, तमाम जो हमने 100 हमारा टोटल जो सैंपल सेट है, ठीक है, हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन है, इसे स्टैटिस्टिक में पॉपुलेशन कहते हैं, जो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है वो है 1000 स्टील बार्स हैं। इन 1000 स्टील बार्स में से हमने एक रैंडमली सेलेक्टेड सैंपल सेट उठाया है, और सैंपल सेट का साइज जो है वो 20 स्टील बार्स हैं। नाउ अब इस 20 स्टील बार्स के जब हम इंडिविजुअली टेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास जाहिर है, ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट एज एन इंजीनियर, कि तमाम के तमाम स्टील बार्स की एक वैल्यू नहीं आएगी, उसमें कुछ फर्क होगा। ठीक है, अगर तो ये स्टील बार्स एक अच्छे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाए गए हैं जिसका क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो उसमें जो है आपके पास वेरिएशन कम होगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी कंट्रोल उस प्रोसेस का अच्छा है तो वेरिएशन कम होगी। अगर एक ऐसी फैक्ट्री ने ये स्टील बार्स बनाए हैं जिसके क्वालिटी कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है तो उसके प्रोसेस वेरिएशन ज्यादा होगी, और प्रोसेस वेरिएशन की वजह से आपके पास क्वालिटी वेरिएशन ज्यादा होगी, और आपके पास यील्ड की स्ट्रेंथ की जो वैल्यूज हैं वो डिस्पर्स्ड होंगी। ठीक है, इस बात की समझ आ रही है मोहम्मद? Yes, सर। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब आप मैनेजर के पास ये लेके चले जाते हैं। ठीक है, ये सारा डेटा आप लेके उसके पास लेके चले जाते हैं। मैनेजर आपको कहता है कि ठीक है, इस टेबल, कैन यू कन्वर्ट दिस होल टेबल इनटू अ सिंगल वैल्यू? आप इस पूरे टेबल को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैन एनीबॉडी टेल मी कैसे कन्वर्ट करेंगे? देंगे ना सर? जी कहें। यस सर, एवरेज लेंगे सर। डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो एवरेज होगा। हम कह सकेंगे कि यार 1000 में मतलब हर एक का ये इस तरह हो सकता है या इतना हो सकता है जो वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आप एवरेज अप्रोच कर रहे हैं ना, ये जुगाड़ वाला अप्रोच है। ठीक है, दिस इज लोएस्ट लेंगे जी, नहीं लोएस्ट भी नहीं लेंगे, और बिल्कुल आपका एवरेज का अप्रोच चलेगा, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल इंजीनियर नहीं है तो एवरेज का अप्रोच इज मोर देन सर एक लेंगे, एक मतलब टॉप लेंगे, मतलब 45 है, और एक मतलब हमारे पास 20 सैंपल में जो सबसे ज्यादा है और जो सबसे कम आया है, इन दोनों को करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे। हम कहेंगे कि
मतलब हर दोनों का इसके दरमियान हो सकता है। थोड़ा सा आप यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो आपने सिर्फ 20 सैंपल्स दिए ना, अगर जी आप सर। 1000 सैंपल को टेस्ट करें तो हो सकता है लोएस्ट 35 भी मौजूद हो। सो हाउ कैन यू से कि 45 और 51.2 के दरमियान होंगे? ये तो सैंपल सेट जो है, जरूरी तो नहीं है कि ये पूरे उसको एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करे, उसको अप्रोक्सीमेट करेगा 1000 की पॉपुलेशन को सैंपल सेट, बट इट डजंट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट, मतलब it's not an exact replica of the population. सर ए इनकी एवरेज के साथ फिर हम एवरेज से स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करेंगे सर। Very good, Waqas Ahmed. That's the way to go. As an instrumentation engineer, you need to know statistics. ठीक है? तो हम क्या करेंगे? What we will do, we will represent yield strength like this. Yield strength will be equal to mean yield strength plus minus number of standard deviation, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma standard deviation, या इसको हम यूं भी लिखते हैं uncertainty in yield strength, और साथ में हम लिख देते हैं कि ये प्लस 2 सिग्मा है या 4 सिग्मा है, या तो हम प्लस माइनस सिग्मा लिख देते हैं, प्लस माइनस सिग्मा कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 सिग्मा, या हम लिख देते हैं प्लस माइनस 2 सिग्मा दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 4 सिग्मा। एनीवे, या आप 4 सिग्मा लिखें या प्लस माइनस 2 सिग्मा लिखें, या आप 4 सिग्मा प्लस माइनस 2 सिग्मा की जगह आप लिख सकते हैं 95 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, because 95 point something percentage corresponds to plus minus 2 sigma या 4 sigma को correspond कर रहा है। ठीक है? So how do you do this? So yield strength तो हम आसानी से निकालेंगे, y bar will be equal to हम तमाम values 20 values को आपस में ऐड कर लेंगे और फिर डिवाइड बाय हम 20 कर लेंगे, तो हमारे पास मीन वैल्यू आ जाएगी। दिस विल बी आवर मीन वैल्यू। फिर अनसर्टेनिटी के लिए हम क्या करेंगे? नाउ अनसर्टेनिटी डिपेंड करता है हम कितने स्टैंडर्ड डेविएशन पे अपनी अनसर्टेनिटी नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, अगर नहीं याद, इट डजंट मैटर एट दिस पॉइंट, लेटर ऑन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उस वक्त हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले से हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर एग्जांपल मीन वैल्यू मेरे पास 50 के एसआई आ गई है। ठीक है? मिसाल के तौर पे मीन वैल्यू मेरे पास 50 के एसआई, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, लेट्स सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन कितने लोगों को याद है एफएसी में या फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में? आई डोंट नो, कब आपने बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपने कब पढ़ी है स्टूडेंट्स? सर मैट्रिक बता, मैट्रिक में पढ़ी है। ठीक है? सो अच्छा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला किसी को याद है स्टूडेंट्स? क्लियर नहीं है सर जी। नहीं क्लियर? ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू xi माइनस मीन वैल्यू, x बार बेशक उसे कह दें। ठीक है? इन सब को सम कर लें, समेशन है, और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स कर लें। ठीक है? सो अगर यहां पर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करूंगा? सो लेट मी डू इट हियर। सो सिग्मा विल बी इक्वल टू xi की वैल्यू क्या है फर्स्ट सैंपल के लिए? i जो है 1 है। ठीक है? सो फर्स्ट सैंपल क्या, xi की वैल्यू यानी x1 की वैल्यू क्या है? 45 है। मीन की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या निकाली थी? वो जो है -20। ठीक है? 50 सॉरी -50। ठीक है? यस। फिर इसको हम स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस सेकंड सैंपल की वैल्यू क्या है? 49 है, माइनस मीन की वैल्यू क्या है? 50 है, स्क्वायर, प्लस थर्ड सैंपल की वैल्यू क्या है? 50.5 है, माइनस 50 मीन वैल्यू, स्क्वायर, प्लस सो ऑन
आखिरी सैंपल x20 की वैल्यू क्या है 50.1 माइनस 50 मीन वैल्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय 20 और होल अंडर रूट। ठीक है, तो इससे मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी, इससे मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। मिसाल के तौर पे वो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 15 KSI। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि मैं अपनी ये स्ट्रेंथ की वैल्यू को किस फॉर्मेट में लिखता हूं। ठीक है, सो आई कैन राइट इट एज दिस। कितने स्टैंडर्ड डेविएशन पे नोट करता हूं। सो y of steel, यानी yield strength of steel is equal to y bar plus minus uncertainty in y at specified standard deviation, इसको हम probability percentage या, ठीक है, ये लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, y bar की मीन वैल्यू क्या हमने निकाली है स्टूडेंट, 50। ठीक है, 50 अच्छा, अब हम अनसर्टेनिटी जो है, मैं अब ये मेरी मर्जी है कि अनसर्टेनिटी मैं कितने स्टैंडर्ड डेविएशन पे नोट करता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे या प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे नोट करता हूं। सो आई कैन राइट इट एज प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और यहां पर मैं p% लिख लूंगा। ठीक है, और टू गो फर्दर 50 प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 सिग्मा की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 15 आ गया। ठीक है, अब 1 सिग्मा कितने प्रोबेबिलिटी परसेंटेज को रिलेट करती है, एनीवन स्टूडेंट्स? प्लस माइनस 1 सिग्मा कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है, कितने परसेंटेज को रिलेट? 67 67 सर आई थिंक 67%। ये हाँ, 67 इस तरह। तो तकरीबन 67 68 नेट पे देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 सिग्मा, तो ये है 1 सिग्मा 68% अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली थोड़ा सा ज्यादा है। दिस इज एग्जैक्टली जो है तकरीबन 68.2 समथिंग है, but we will approximate it as 68%। ठीक है, और यहां पर मैं KSI लिख लूंगा, सॉरी। ठीक है, यही वैल्यू मैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी लिख सकता हूं। ठीक है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे वैल्यू क्या होगी जी? सर ये 68 का समझ में नहीं आया। आप लोगों को क्वालिटी कंट्रोल में आपने 6 सिग्मा पढ़ा है? जी सर पढ़ा है बिल्कुल। यस सर। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, किसने क्वेश्चन पूछा है? फजल सुभान पूछा है? यस सर पढ़े। स्टूडेंट, हाँ सुभान, ऐसा है। ठीक है, तो 6 सिग्मा कितने परसेंटेज को कॉरस्पॉन्ड करता है? कुछ आपको याद है? खैर जो याद है वो बता दें, अंदाज से बता दें, गलत बता दें। सर अभी भूल गए। It corresponds to 99, हाँ, this corresponds to 99 point something %। ठीक है, यस सर। 99.7%। और प्लस माइनस 2 सिग्मा कितने को करस्पॉन्ड करता है? 95%। प्लस माइनस 1 सिग्मा कितने को करस्पॉन्ड करता है? प्लस माइनस 1 सिग्मा कितने को करस्पॉन्ड करता है? तो है 68। यार 68%। सर आपकी टेंशन आवाज नहीं लेनी, हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब आवाज आ रही है मेरी? यस सर। स्टूडेंट्स, ठीक है। सो सुभान, बस अब फिलहाल ये नंबर्स नोट कर लें कि प्लस माइनस सिग्मा कॉरस्पॉन्ड्स टू 99.7, आवाज कट रही है। प्लस माइनस 1 सिग्मा कॉरस्पॉन्ड्स टू 68%।
अच्छा, आवाज अभी यस आ रही सर। है? यस सर, यार ठीक है। स्टूडेंट्स, सर इंटरप्शन यस हो रही सर, आ रही आवाज आ रही। ठीक है। सो सो फिलहाल सुभान आप इतना याद करें, इंशाल्लाह डिटेल में हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। डिस्कस करेंगे कि सर क्यों आवाज कट प्लस सर आवाज कट रही है। सर वॉइस इश्यू है सर, आवाज कट रही है। 1 sigma corresponds to 68%. Why does plus minus 2 sigma सर वॉइस में प्रॉब्लम है। corresponds to? सर सर वॉइस आपकी ठीक वॉइस है, लैग कर रही है सर। I will be just give सर आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है सर, कुछ समझ नहीं आ रही। hello. यस सर। सर वॉइस में प्रॉब्लम है। फजल सुभान, आप माइक माइक ऑफ करें प्लीज। Hello. जी सर, अभी ठीक हो। अब ठीक है जी सर। जी Hello. सर, ठीक है। चल ठीक है, चले मैं यस सर। ठीक है, I just made sure that nobody else is using the internet. So hopefully अभी issue नहीं होगी. So we were discussing that you can show the result in a single figure like this. ठीक है, लेकिन अगर आप देखें, now this is my preference, मैं इसी रिजल्ट को यूं भी लिख सकता हूं. I can write it as 50 plus minus 2 sigma p percentage. ठीक है, so I can write it as 50 plus minus अच्छा sorry थोड़ी सी let's say 1 sigma is 5 ksi. Let's take 1 sigma is 5 ksi. Then 2 sigma कितना होगा सुभान? 10 सर। 10 ksi. अब मैंने बाकी लोगों को कैसे समझाऊंगा कि ये मैंने 2 सिग्मा पे, ये अनसर्टेनिटी जो मैं शो कर रहा हूं वो 2 सिग्मा पे शो कर रहा हूं. सो हाउ विल आई टेल इट टू एवरीवन एल्स? मैं कैसे कैसे बताऊंगा लोगों को? यहां पे मैं क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी 95 लिखेगा सर। हाँ, और 95% कितने सिग्मा को कॉरेस्पॉन्ड करता है? प्लस माइनस कितने सिग्मा को कॉरेस्पॉन्ड करता है? 2 सिग्मा 2 सिग्मा को. अगर मैं यहां पर लिख लूं, इसी एक्सपेरिमेंट के लिए मैं लिख लूं 15 के ऐसा है, तो फिर मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 99 पॉइंट समथिंग 99 point something, 99.7. 3 सिग्मा की जो वैल्यू. समझ आ रही है इस बात की? यस सर। ठीक है, तो हमने एक बहुत ही बेसिक काम किया है. इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का इसके साथ वास्ता पड़ेगा. हमारे पास क्या थी कि हमारे पास एक पॉपुलेशन थी. ठीक है, पॉपुलेशन जो हमारे पास फुल सेट होता है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं. ठीक है, जिस चीज को हमने मेयर करना है. जैसे सर्वेज होते हैं ना, पाकिस्तान में अब एक सर्वे कि भाई इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर कौन है. नंबर 1 इमरान खान, नंबर 2 नवाज शरीफ, नंबर 3 समवन एल्स. ठीक है, और फिर वो लोगों के पास जाते हैं. सो पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन कितनी है? पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन जो है वो तो मिसाल के तौर पे 22
हाँ That's true. 22 में, हाँ 22 मिलियन या 23 मिलियन है। तो हम जो सर्वे जो बंदा कंडक्ट करता है, ही डजंट गो टू ईच एंड एवरी वन, ठीक है, वो हर एक के पास तो नहीं जाता। वो क्या कहता है कि वो एक रैंडम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उठा लेता है, ठीक है, पॉपुलेशन से सैंपल सेट उठा लेता है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेट का मतलब क्या है कि देखिए, अगर वो सिर्फ 1,000 बंदों का सैंपल सेट ले ले, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव ना हो, पूरे मुल्क की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करे, मिसाल के तौर पे वो ले ले सिर्फ इस्लामाबाद में लोगों को ओपिनियन, ठीक है, ना लाहौर में ले, ना पेशावर में ले, ना बनू में ले, ना डे खान में ले, ना मुल्तान में ले, ना कराची में ले, सिर्फ इस्लामाबाद में ले ले, ठीक है। तो अब वो सैंपल सेट से जो वैल्यू आएगी वो पूरे पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इस बात की समझ आ रही है स्टूडेंट? Yes, sir. जी ठीक सर। है। सो जब कभी आप सर्वे लेते हैं या स्टेटिस्टिकल वैल्यूज एक पूरे बड़े सेट का लेना चाहते हैं, तो जाहिर है अगर आप पूरे सेट को मेजर नहीं कर सकते, आपने उसमें से एक सैंपल सेट उठाना है, देन दिस सैंपल सेट मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, ठीक है। तो हमारे केस में जो अभी हम पॉलिटिकल एक सर्वे की मैंने आपको एग्जांपल दी है, उस केस में तो आपने मेक श्योर करना है कि वो मुल्क के डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन जो है वो इंक्लूडेड हो आपके सैंपल सेट में, डिफरेंट एज ग्रुप्स इंक्लूडेड हो, बोथ द जेंडर्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट प्रोफेशंस जो हैं वो इंक्लूडेड हो। जब आप इस तरह से तमाम चीजों को इंक्लूड करेंगे तो आपके जो पॉपुलेशन, जो सैंपल सेट की जो वैल्यूज आएंगी, वो वैल्यूज जो हैं वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आपका सैंपल सेट जो है पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो ट्रक है स्टील के सरिये का, इसमें आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये आपने जो 20 सैंपल्स उठाए हैं, ये पूरे के पूरे ट्रक का जो मटेरियल है 1000 बार, उसको रिप्रेजेंट करे? हाउ वुड यू डू दैट स्टूडेंट्स? हम रैंडमली पिक करेंगे। जी जी बिल्कुल, रैंडमली पिक करेंगे। क्यों? उसकी रीजन क्या है? क्योंकि देखिए, अगर आप शुरू के 10 या 20 पीसेस उठा लें तो हो सकता है वो प्रोसेस के शुरू में बनाए गए हैं, हो सकता है वो प्रोसेस जब स्टील बार्स बना रहा था तो शुरू में प्रोसेस के पैरामीटर एक थे और आखिर में प्रोसेस के पैरामीटर चेंज हो गए थे। एज द प्रोसेस कंटिन्यू द पैरामीटर्स चेंज्ड, ठीक है। तो अगर आप शुरू के सिर्फ 20 बार्स उठा लेंगे तो आपके जो 20 बार्स का ये जो डेटा है, ये जो हमारे पास वैल्यूज आ गए, दिस विल नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर आप रैंडम लेंगे, कुछ स्टार्ट में ले लेंगे, कुछ मिडल में ले लेंगे, कुछ एंड में ले लेंगे, तो एटलीस्ट जो प्रोसेस वेरिएशन आ रही है विद द टाइम, उसको आपने, उस वेरिएशन को आपने इनटू अकाउंट में ले लिया है, और अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो पूरे के पूरे 1000 बार्स को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ हाउ विल यू रीड दिस वैल्यू? इस वैल्यू को आप कैसे रीड करेंगे? 50 प्लस माइनस 5 KSI, ठीक है। इसको हम ऐसे रीड करेंगे कि फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू रेंज, ताकि आप आसानी से समझ। 50 प्लस माइनस 5 KSI का मतलब यह है कि 45 से लेके 55 KSI, ये रेंज है, ठीक है ना। 50 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू corresponds to a range of 45 to 55 KSI। अब ये जो साथ में 68% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा है। मैं कहता हूं कि अगर आप इस 1000 बार में से, इस 1000 बार में से 100 रैंडम सैंपल्स उठाएंगे, 1000 बार्स में से 1000 नहीं, 100 रैंडम सैंपल्स उठाएंगे, तो उस 100 रैंडम सैंपल्स में से 68 सैंपल्स की वैल्यू इस रेंज के अंदर होगी। Yes, sir. ठीक है। अब
68 सैंपल्स की वैल्यू, तो इसकी ये मेरा कॉन्फिडेंस, स्टैटिस्टिक्स मुझे ये बता रहा है, मुझे स्टैटिस्टिक्स पे एतबार है, और स्टैटिस्टिक्स मुझे ये कहता है कि अगर आप इस तरीके से सारी कैलकुलेशन करेंगे, इस तरीके से, और फिर उसको यूं आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पॉपुलेशन में से 100 रैंडम सैंपल्स उठाएंगे, तो स्टैटिस्टिक्स एक तरह से आपको श्योरिटी दे रहा है कि इस 100 सैंपल्स में से 68 सैंपल्स की वैल्यू वो इस रेंज के अंदर होगी। जो 68 के अलावा जो बाकी सैंपल्स हैं, वो 32 सैंपल्स हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। वो 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, मिलियन भी हो सकती है, बिलियन भी हो सकती है, गजीलियन भी हो सकती है। ठीक है, मतलब स्टैटिस्टिक्स उसके बारे में आपको कोई श्योरिटी नहीं दे रहा, कोई आपको उसका मतलब है गारंटी नहीं दे रहा कि इस 68 से ज्यादा जो सैंपल्स, 100 में से जो बकाया सैंपल्स है, उनकी क्या वैल्यू होगी, उसके बारे में ये आपको कुछ नहीं बता रहा, ये आपको सिर्फ 68 के बारे में बता रहा है। ठीक है, इन केस आप ये 2 सिग्मा को इंटरप्रेट करेंगे, तो 2 सिग्मा क्या है? 2 सिग्मा आपको ये बता रहा है, इसको हम कैसे, सबसे हाँ, हम पहले रेंज के केस में लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा 35 to 65 की रेंज हमारे पास आ गई ना, यानी 50 - 15 से 35 आ जाएगा, 50 - 15 से, और 50 + 15 से जो है 65 आ जाएगा। ठीक है, तो और हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल अब क्या है? 95% है। तो अब ये हमें बता रहा है, व्हाट डज दिस मीन्स, कि अगर मैं इस पॉपुलेशन 1000 की पॉपुलेशन में से 100 रैंडम सैंपल्स ले लूं, तो उन 100 रैंडम सैंपल्स में से 95 सैंपल्स की वैल्यू इस रेंज के अंदर होगी, और बाकी जो 5 सैंपल्स हैं उनकी यील्ड स्ट्रेंथ वैल्यू कुछ भी हो सकती है, या 35 से कम हो सकती है, इट कैन बी 0 अप टू 35, या 0 और बिलो 35, और इट कैन बी एनी वैल्यू ग्रेटर देन 65। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या आपको समझ आ रही है ना? स्टैटिस्टिक्स सिर्फ उन चीजों को आपको एश्योरेंस दे रहा है जो इस रेंज के अंदर है। वो कितने हैं? वो 95% एश्योरेंस है। ठीक है, इसी वैल्यू को आप 99% एश्योरेंस लेवल के साथ भी लिख सकते हैं। 99% एश्योरेंस आपको कैसे अचीव होगा, उसको आप कैसे लिखेंगे? मीन वैल्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो वी विल राइट इट एज 50 प्लस माइनस, एक स्टैंडर्ड डेविएशन किसके के बराबर है? 5 KSI के बराबर है। ठीक है, तो अब हमने ये बताने के लिए कि ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो यहां पर मैं 99.7% लिख लूंगा। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 99%, सो दिस विल कम आउट टू बी 50 प्लस माइनस 15 KSI एट 99.7%। अब इसका मतलब, इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा? हाउ विल आई इंटरप्रेट दिस वैल्यू? सबसे पहले मैं इसको रेंज में कन्वर्ट कर लूंगा, सो दिस विल कम आउट टू बी दैट यील्ड स्ट्रेंथ, सॉरी, ये पहले वाला 10 था जी, सो यील्ड स्ट्रेंथ, अच्छा पहले वाला 10 था, ओके, वो पहले वाला 10 yes, मतलब 3 से यस सर, ये पहले वाला 10 था, ये 15 है। yes, this will be from 40 to 60. ठीक है, yes sir, and this range will be from 35 to 35 to 65 65, sir। और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा क्या है? 99.7%। फॉर सिंप्लिसिटी सेक वी विल राइट इट एज 99%। ठीक है, आसानी के लिए। ठीक है, रफली 99%। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप इन 1000 स्टील बार में से एनी 100 रैंडम बार्स उठाएंगे और उनको आप यूटीएम मशीन में टेस्ट करेंगे, तो 100 में से 99 बार्स की वैल्यू इस रेंज के अंदर होगी, और एक बार या एक्चुअली 0.3 बार, यानी मोर 99% चांस ये है कि आपके पास वैल्यू जो है वो इस रेंज के अंदर होगी, और 0.3% चांस जो है कि जो सैंपल आप उठाएंगे, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप ये इस तरीके से भी बयान कर सकते हैं
एक तो ये कि आप कहते हैं कि मैं 100 सैंपल्स उठाऊंगा तो उसमें से 99 सैंपल्स की वैल्यू इस रेंज के अंदर होगी और एक सैंपल या लेस देन 1 सैंपल की वैल्यू जो है इस रेंज से बाहर हो सकती है। अदर वे ऑफ सेइंग इट कि अगर आप इसमें से कोई एक सैंपल रैंडमली उठाएं, ठीक है, तो 99.7% चांस है कि इसकी वैल्यू इस रेंज के अंदर होगी और 0.3% चांस है कि जो एक सैंपल आपने उठाया जिसको आप यूटीएम मशीन पे टेस्ट करेंगे तो उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी उसके 0.3% चांस है कि वो इस रेंज से बाहर होगी। क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर ये जो 2 सिग्मा या 3 सिग्मा है सर, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? सर ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे डिपेंड करता है? नहीं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ठीक है, कि आपके डेटा में वेरिएशन कितना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज मैं लेट मूव टू द अदर स्लाइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 5 वैल्यूज हैं, उनकी वैल्यू जो है 50.1 टेस्टिंग, 50.2, 50.0, 49.9 और 49.8 आ जाती। अब इसका अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, इसका सिग्मा जो होगा वो फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, वो फॉर एग्जांपल दैट विल बी 0.1 आ जाएगा। एक और आपके पास, दिस इज सेट 1, another set 2 has values of 49, 48, ये चले मैं उसी सीक्वेंस में कर लेता हूं, 51, 52, 50, 49, 48। इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हो सकता है आपके पास 1 या 1.2 KSI आ जाए। ठीक है, कैलकुलेशन से। अभी आपको देखें ये वैल्यूज अगर आप देखें ये ज्यादा एक दूसरे के नजदीक है, मतलब इसके वैल्यूज के अंदर जो डिस्पर्शन है, जो स्प्रेड है वो कम है। ये वाली वैल्यूज एक दूसरे से ज्यादा दूर हैं, ये डिस्पर्स्ड वैल्यू है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपको अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन, अमाउंट ऑफ वेरिएशन आपको बताता है। ठीक है, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से के अलावा एक और स्टेटिस्टिकल वैल्यू है जिसे कहते हैं, हम कहते हैं वेरिएंस, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है दिस इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, सो क्वेश्चन किन्होंने ने पूछा था, किस स्टूडेंट ने पूछा था? सर मैंने कबीर खान। कबीर जी, कबीर। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की समझ आ रही है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन का मैग्नीट्यूड किस चीज को सिग्निफाई करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का मैग्नीट्यूड सिग्निफाई करता है कि आपके पास जो सैंपल सेट है, उस सैंपल सेट्स के अंदर जो मुख्तलिफ वैल्यूज है वो एक दूसरे से अगर ज्यादा मुख्तलिफ होंगी, ठीक है, उनके अंदर वेरिएशन ज्यादा होगा तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये मीन वैल्यू से कितनी डेविएट कर रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि मीन वैल्यू से डेविएट कितना है, ज्यादा डेविएट कर रहा है। अगर आप देखें इस केस में मीन वैल्यू जो है हमारे पास, इस केस में सेट 1 के केस में मीन वैल्यू 50 है। ठीक है, और ये जो जितनी हमारे पास वैल्यूज हैं वो 50 के नजदीक है। ठीक है, जबकि दूसरे केस में भी हमारे पास मीन वैल्यू 50 है, लेकिन जो सेट के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज हैं वो 50 से फासले पे मौजूद हैं। ठीक है, तो जो अगर वेरिएशन ज्यादा होगी तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर वेरिएशन कम होगी तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होगी। जी कबीर, डज दैट मेक सेंस? यस सर। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? क्या आपने कुछ और पूछना चाह रहे हैं? यस सर, गॉट इट। ठीक है, चलें, यू वेलकम। अच्छा, अब अभी तक देखें हमने कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, वेरिएशन, अनसर्टेनिटी, वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी हमने वो चीजें पढ़ी हैं। पॉपुलेशन क्या चीज होती है, सैंपल सेट क्या चीज होती है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़े थे कंपोनेंट्स ऑफ जनरल मेजरमेंट सिस्टम, सो आई विल नॉट टेक मोर टाइम ऑन दैट। देन वी डिस्कस के व्हाट इज सेंसर, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर,
ठीक है, ट्रांसड्यूसर की definition, signal conditioning, I elaborated that in the previous lecture. जिन लोगों ने वो lecture miss किया, उस lecture की recording मौजूद है, so you can go back and revisit that lecture. ठीक है, output stage में you can have multiple devices, you can have a readout device, you can have marked scale, जैसे thermometer के case में marked scale है, you can have a tape recorder or a video or a storage oscilloscope or a computer based hard disk, RAM, ठीक है, CRT monitors, LED monitor, और फिर हमारे पास लास्ट में जो है फीडबैक, ठीक है, फीडबैक कंट्रोल स्टेज. अभी हम उस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इस कोर्स में हम जितने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे they don't have actually the items that are included in our course, they do not have a feedback stage. In the control course in 8th chapter we will discuss in detail the feedback stage of an instrument. So for the time being you need to know what is a feedback stage, लेकिन हम उसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे. ठीक है, we will discuss that in detail in the next semester. ठीक है, then we discussed liquid bulk thermometer, that this is a transducer and sensor. ठीक है, ये capillary tube जो है, it is a signal conditioning stage because it amplify the effect of the ट्रांसड्यूसर आउटपुट. ठीक है, क्योंकि देखें एक्सपेंशन हो रही है, तो अगर इस कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर ज्यादा होगा तो जो कॉलम की हाइट है वो कम हो जाएगी फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन. लेकिन अगर कैपिलरी ट्यूब के डायमीटर में कम रखूं for the same amount of expansion as in the previous case, but with a smaller capillary tube diameter, the column length will be larger. ये length ज्यादा होगी. ठीक है, ये बात clear है students? So this capillary tube is behaving as a amplifying device, amplifier stage for this instrument. ठीक है, similarly ये अगर आप if you look at this thermometer, it has a scale on it, and from this scale we can read the measurement value. So this constitute the output stage of this instrument, measurement instrument. Any questions, students? Should I move forward? Yes, sir. चलें, ठीक है. सो वही चीजें यहाँ पे डिफाइन है कि मेजर्ड मीडियम क्या है, कि जिस मेजर्ड मीडिया क्या है, कि जिस चीज के हम वैल्यू मेजर करना चाह रहे हैं वो क्या है. हमारे पास फ्लूइड है, वाटर है, एयर है, एक्सेट्रा. बॉडी है, उसका टेम्परेचर हम मेजर करें. मेजर्ड वेरिएबल क्या है, कौन सी वेरिएबल को हम मेजर करें, टेम्परेचर मेजर करें. इनपुट सिग्नल क्या है, एनर्जी एक्सचेंज है, हीट एनर्जी ट्रांसफर है फ्रॉम द मेजर्ड मीडिया टू द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, सेंसर क्या है, लिक्विड इन बल्ब जो है, थर्मल एक्सपेंशन फिजिकल फिनोमिना को यूज करते हुए लिक्विड इन बल्ब जो है, दिस इज आवर सेंसर. ट्रांसड्यूसर जो है, ट्रांसड्यूसर प्लस सिग्नल कंडीशनिंग. ठीक है, ट्रांसड्यूसर हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है क्योंकि एक्सपेंशन को वो लीनियर, यानी जो हमारे पास जो मरकरी जो बल्ब की फॉर्म है वो तो एक स्फेरिकल फॉर्म है, उस स्फेरिकल फॉर्म की एक्सपेंशन को हमने लीनियर एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं, and we use the capillary tube for that. So we use यानी 3-dimensional expansion को हमने pseudo uni-axial expansion में convert कर दिया है. That is our transducer. And then the diameter of the capillary tube behaves as a amplifier, and amplifier is part of the signal conditioning stage. And in the end, output is the output stage corresponds to the readout scale on the thermometer. Okay, so let's move forward. We discussed loading effect. Okay, in the previous lecture we said that if we have a media, let's suppose this is water in a cup, and it has certain temperature. Let's suppose its temperature is 25 degrees C. Before I connect an instrument, a thermometer to it, its temperature is 25 degrees C. But when I connect a thermometer to it, ठीक है, so क्या होगा, there will be some energy transfer from the
assuming कि thermometer का temperature कम था और पानी का temperature ज़्यादा था, so there will be some net energy transfer from water to the thermometer. Since the temperature of a material corresponds to Q is equal to mCp delta T. ठीक है? Delta Q is equal to mc delta T. ठीक है? Now, since some heat transfer occurred from the medium to the thermometer, therefore this will result in some delta T. That means in the act of measurement of temperature with a contact thermometer, in the act of measurement, the temperature of the measured media is affected. Let's suppose from 25 degrees C, it becomes 24.9 degrees C. So thermometer will measure 24.9 degrees C. But in reality, before we connected the thermometer to the measurement media, the measurement media had a temperature of 50 degrees C. That means that by introducing the instrument to the measurement medium for measuring its variable value, it affected the value that we wanted to measure. And this process or this phenomena is called loading effect of an instrument. Okay? This is called loading effect of an instrument. Okay? We will discuss this effect in details in a lecture down the road. I don't know if it's a fourth lecture or third lecture. We will know that later. So we will discuss this in details. Right now, I'm just giving you an overview of what is a loading effect of an instrument. Okay? So this loading effect this loading effect can exist for pretty much every contact instrument. So it can be loading effect exists for a contact thermometer, loading effect exists for a voltmeter, loading effect consists for an ammeter, or loading effect consists for any other instrument that is a contact, or that is a instrument that perturbs perturbs means that that disturbs the measurement media in the process of taking measurements. Okay. Any question? Should I move forward? Yes, sir. Okay. Okay, so there's analog systems. There are analog signals and digital signals. Okay. At this point, I'll just give you a simple representation of the two signals. So this is a analog waveform. Okay. And a digital waveform of the same signal would be something like this. Okay. Now read the slide. Analog signal, continuous representation. Continuous ka samajh aa rahi? This is continuous, but this is not continuous. There is a break between two data points. Okay? Continuous presentation of information. This is some of our measurement signal. So this is magnitude, and this is time. Similarly, this is time, and of course, this is magnitude of the signal. So it can be a pressure signal, it can be a temperature signal. So it continuous presentation of information, continuous in both signal, which is the magnitude, and time axis. So it is continuous vertically and it is continuous horizontally. There is no break either vertically. So sometimes it's like a signal like this. If you look at this signal, for example, this signal, and then now this signal is continuous in time, means on the time axis for every value of t, there exists some value of the signal. But this signal is not continuous in y-axis, because of certain value of y, there is a break of signal
for certain value of the y-axis. Okay? So a signal can be continuous in x-axis, a signal can be continuous in y-axis, a signal can be continuous in both the axes. And this signal, this particular signal, is discontinuous in both the axes. Clear, students? यहाँ तक? Yes, sir. Okay? So analog signal, there is a chapter of analog and digital devices. We will discuss it in more detail in that chapter. For now, this is an introductory lecture, so I'll just quickly read this slide. If you have any question, you can ask me after I'm finished reading this slide. So analog signal is a continuous representation of information, continuous in both signal and time axis, or continuous in both magnitude and time axis. And an example is analog oscilloscope, strip chart recorder. Does anyone know what an oscilloscope is? किसी को पता है? Students? A device to measure. अच्छा. सर जो वाइब्रेशन बताओ. ठीक है. Let's take advantage of our online nature of the class. So let me show you what's an oscilloscope look like. Oscilloscope. So I'm just typing oscilloscope in Google Chrome, and I have some pictures for you. And let me share a window for you. Can you see an एक minute. Can you see an oscilloscope now? Yes, sir. ठीक है? So this is oscilloscope. ठीक है? And you can measure, basically it plots a signal. ये आपको ग्राफ बना के देता है. ठीक है? Whatever signal आप इसे provide करते हैं, for example एक voltage signal है. ठीक है? और आप इसको measure करना चाहते हैं. ठीक है? So typically oscilloscope doesn't give you, or at least the old oscilloscope, they do not give you numerical values of the signal. Rather, they plot the signal on a scaled graph. Scale graph के ऊपर ये आपको plot करके दे देता है कि भाई जैसे इस तरह का आपको नजर आ रहा है. ठीक है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलें. Now let's go back to our presentation. ठीक है? Let me share it again with you. सर ये जो हार्ट बीट सर मेजर होती है सर ये भी ऑसिलोस्कोप ही होती है नहीं? Yes, it's not it isn't मतलब it works on the same principle as oscilloscope, means it has an oscilloscope built into it. ठीक है? लेकिन it has some more function as well. Actually होता क्या है कि हार्ट बीट में क्या होता है, हार्ट बीट की जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उसको ये मेजर करता है और ऑसिलोस्कोप यही काम करता है. लेकिन जाहिर है वो स्पेशल, आप यूं कह सकते हैं कि इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलोस्कोप that is designed for measuring heartbeat. Otherwise, yes, in principle, it is an oscilloscope. अच्छा. ठीक है? So, okay. In a digital signal, is sampled in time at finite frequency and voltage is quantized into bits. ठीक है? I don't want to go into that details for now. Just remember this plot जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बना के दिया. ठीक है? This is your digital signal. ठीक है? Discrete in both magnitude and time axis. Discrete का मतलब ये है कि continuous नहीं है. ठीक है? Means divisible है, separatable है. ठीक है? Approximate presentation of information, क्योंकि actual signal तो ये था.
ठीक है। अगर मैं इस डैश एक्चुअल सिग्नल को हटा दूं तो सिर्फ ये जो डॉट्स है, डिजिटल सिग्नल्स के डॉट्स हैं, इट डजंट शो द फुल इंफॉर्मेशन, इट ओनली शोज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और पार्ट ऑफ द सिग्नल। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? जी सर। Yes, sir. And typical resolution range between 8 bits and 16 bits. 12 and 16 are more common. ठीक है? At this point, we will discuss the resolution and resolution in terms of bits in the details in the later lectures. ठीक है? Any question? I know I mentioned that skip some information, but if you have any question you want, or you have any thoughts you want to share with us, please feel free to do so. No? So let's move forward. This is some analog to digital converter, of course. GG students. Okay. सर नमाज के लिए टाइम मिल जाए 10 मिनट ब्रेक। ठीक है, बिल्कुल ले लें। नमाज के लिए ठीक है, 10 मिनट। अभी 4:07 हैं। वी विल स्टार्ट एट 4:15। चलें 4:15 पे। ठीक है, टाइम जरा कम है। आप खैर है 6 मिनट है आपके पास, 7 मिनट। ठीक है, जल्दी से नमाज पढ़ के आ जाए। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर।
अभी तक क्लास शुरू नहीं हुई है। वेट करो, शुरू नहीं हुई। भाईजान सब लोग अपने माइक ऑफ करो। हेलो जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही? बिल्कुल जी सर। चलें स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज ए टू डी कन्वर्टर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अभी जो आपके सामने मैंने दो सिग्नल ड्रा किए थे, ठीक है। सो इफ यू हैव दिस एनालॉग सिग्नल एंड इफ यू गिव दिस एनालॉग सिग्नल, this signal to this ADC, then the output of this signal will be a digital signal, something like this. Okay? And these are the specification for different types of analog digital signals, including their bits resolution and their sampling rate. We will discuss those in the digital signal or digital devices chapter later on in this course. So for now, I'll move forward. Experimental test plan. Before we do that, I don't want to do that right now. Let's do some of the other traditional subtopics before we come to the experimental test plan.
Okay. So let's discuss what calibration is. Okay. For example, if all of you are familiar with the foot ruler, ठीक है, जो distance measurement के लिए use होते हैं, ठीक है? Is that true? Most of you, or actually everyone, is familiar with that? Yes, sir. ठीक है. So how much trust do you have? Yes, sir. How much trust do you have in this foot ruler? कि ये से जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, मतलब ये रूलर गलती नहीं है. Of course, अगर आप cheap foot ruler खरीदेंगे और उसको एक दूसरे accurate foot ruler के साथ compare करेंगे, then there might be some difference. ठीक है? So how can we make sure that the value given by a measurement instrument is accurate? Or how can we tell that the values given by a measurement instrument has the same amount of uncertainty as noted by the instrument manufacturer? Okay? So how do we do that? By comparing it with a standard reference value. So we do it in two ways. One is comparison with standard reference value. Okay, let's do that like this. For example, मेरे पास एक weight balance है. ठीक है? Let's suppose एक weight balance. Most of you are familiar with the weight balance, digital weight balance. ठीक है? Digital weight balance. कि उसके ऊपर आप, let's suppose, an apple रखें तो वो यहाँ पर आपको रीडिंग दे देता है कि ये जो है 20 ग्राम रीडिंग आपके पास है. Now how can you be sure that the reading, that the weight of, or how can you be sure that the instrument, that the weight balance instrument is accurate, that the reading given by this instrument is accurate? One way of checking the accuracy of the instrument is by calibration. And what we do, we take some standard weights, let's suppose 20 gram, and those standard weights have been standardized. I mean, they are very accurate. Okay? I know you might be asking a question, okay, sir, how can we know that this is 20 gram? Okay? So I'll answer this question later. For now, assume that we have an accurate 20 gram, and if we put this 20 gram on this scale and its output value is 20 gram, then we know that this scale gives us accurate value for 20 gram. Now, if I place an apple on this scale, and it also gives me a value of 20 gram, then I can be sure of that this apple actually weighs 20 gram because I just compared the output of this measurement instrument with a standard input value, and it gave me correct output value. So I'm sure of the accuracy of this instrument. Now, this is one way of doing it. Okay? Now, what is so how do you define calibration? Student, can anyone give me a hint? What is calibration? मतलब if अगर आप वाइवा में आते हैं और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि can you tell me what do you mean by calibration? What do you mean by to check the instrument accuracy with some standards? ठीक है, ये जो अभी हमने की है, based on that, your definition is true, but this is not a textbook definition. Okay, anyone else? Students? सर अगर हम किसी मजरिंग सिस्टम को एक नॉन वैल्यू अप्लाई करते हैं और उससे हम इस नॉन वैल्यू के मुताबिक हम इसके ऊपर यानी इससे और वैल्यू निकालते हैं कि आप दोनों की बात ठीक है, आप दोनों की बात बिल्कुल ठीक है.
लेकिन मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करूंगा. बिफोर आई डू द एक्सपेरिमेंट, दिस शुड बी योर आंसर. Develop input and output relationship for instrument is the procedure by which we develop input and output relationship for an instrument is called calibration. ठीक है? Now let me explain. Can anyone give his or her thoughts on this? इसके बारे में मुझे बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? Develop relationship between input and output of an instrument. उसको किसी स्टैंडर्ड के साथ सर कंपेयर करेंगे. Okay. जो हम इनपुट देंगे सर वो तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होगी ना, और उसकी आउटपुट उसके साथ कंपेयर करेंगे. सर जिस So we can trust the instrument to measure the correct value. Measuring quantity with respect to the. अच्छा, एक मिनट थोड़ा सब्र करने. Hello, I'm sorry, दरमियान में कुछ एक important task आ गया था. Okay, student, we are in the middle. Okay, develop input and output relationships. Any more thoughts? सर किसी भी मेजरिंग क्वांटिटी का जो मेजर है वो दूसरे आउटपुट दूसरे इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम उसका वो मेजरिंग आउटपुट निकालते हैं उसका. अच्छा, नहीं, ठीक है. आप सब लोग की मतलब है, आई गेट द आइडिया. जो अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे आप बिल्कुल यही आपका जवाब ठीक है. ठीक है, अब मैं आपके सामने एक और सिनारियो रखता हूं और आई होप कि देन यू विल रियलाइज कि व्हाट डज दिस मीन. ठीक है, एंड द सिनारियो इज कि हम जो है एक उसमें काम करते हैं, क्या कहते हैं, हमारी एक कंपनी है इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर की. ठीक है, और हमने एक बल्ब थर्मोमीटर बना लिया. ठीक है, स्पिरिट बल्ब थर्मोमीटर. आप लोगों ने एफएससी में प्रैक्टिकल किए होंगे स्पिरिट बल्ब थर्मोमीटर के साथ. ठीक है, जो इसमें यहाँ पर जो है हमारे पास जो है स्पिरिट होता है, फिर इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब होता है, जैसे आम थर्मोमीटर नहीं होता उसी तरह का, लेकिन साइज में जरा बड़ा होता है, स्पिरिट बल्ब थर्मोमीटर. ठीक है, अब हमने स्पिरिट बल्ब थर्मोमीटर तो बना लिया है. ठीक है, वी हैव मेड द स्पिरिट बल्ब थर्मोमीटर, जो कि मिसाल के तौर पे ये है, वी हैव मेड इट. ठीक है, और ठीक है, लेकिन अभी हमने इसको कैलिब्रेट नहीं किया. ठीक है, अभी देखें इसके ऊपर हमने कोई स्केल नहीं डाला. अगर इसके ऊपर स्केल नहीं है, ठीक है, और ये मिसाल के तौर पे एक पानी के कंटेनर में मैं डाल दूं. ठीक है, अगर पानी के कंटेनर में मैं डाल दूं और इसके अंदर जो स्पिरिट या मरकरी जो भी है वो मीडियम इसके अंदर मूव करता है अप अप और डाउन, किसी एक लेवल पे जाके रुक जाता है, तो क्या इस थर्मोमीटर से मैं कोई वैल्यू ले सकता हूं अगर इसके ऊपर स्केल नहीं है? स्टूडेंट्स, नो सर. नहीं ले सकता ना. दिस थर्मोमीटर, ठीक है, इसके अंदर जो पारा होगा या इसके अंदर जो स्पिरिट होगा या मरकरी होगा, उसके जो कॉलम होगा उसका लेवल बढ़ेगा या कम होगा अगर पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा उसके हिसाब से. लेकिन मुझे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू पता तो नहीं चलेगी ना अगर इसके ऊपर कोई स्केल नहीं है. नो सर, नहीं पता चलेगी. नहीं पता चलेगी. अब ये तो हमने खुद बनाया है, तो इसका मतलब है हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इसके ऊपर स्केल लगाना है. ठीक है, अब स्केल हम कैसे लगाएंगे? हाउ वुड वी डू द स्केल? स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करेंगे.
स्टैंडर्ड मीटर के साथ यस सर एक्सपेंशन और उसके दरमियान जो है वो एक रिलेशनशिप वो डेवलप करेंगे, उसके बेस पे एक इक्वेशन वगैरह होंगे, वो फिर हम उससे स्केल निकालेंगे। बिल्कुल उसी तरह से आप सबके जवाब ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम एक ग्राफ बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड आवर कैलिब्रेशन प्लॉट, ठीक है, और कैलिब्रेशन कर्व। इस साइड पे इनपुट होगा और इस साइड पे हमारे पास आउटपुट होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज हम इसको दे देंगे 0 डिग्री सी। पानी को हम स्टैंडर्ड 0 डिग्री सी पे रख लेंगे। अब 0 डिग्री सी तो आप दे सकते हैं ना, 0 डिग्री सी आप कैसे मेंटेन करेंगे, किसी को पता है? अगर आपके पास कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सी है? स्टूडेंट्स, किसी को पता है? सर इसको इंसुलेट करेंगे। आइस बात का नाम सुना है आपने कभी? नहीं, आइस नो बात सर। का नाम सुना है? आइस बात, Yes, देखिए sir. आप सबको पता है कि फेस Yes, sir. चेंज पे प्योर वाटर के जो 2 फेस चेंज वेपर्स, ठीक है, ये 2 फेस चेंज पॉइंट्स हैं। आपको पता है कि जब फेस चेंज हो रहा होता है तो उस फेस चेंज पे जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। कंसिडरिंग Yes, sir. अगर बॉइलिंग पॉइंट में प्रेशर Yes, sir. का कांस्टेंट होना जरूरी है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट पे प्रेशर इतना इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। सो अगर आप एक पानी लें प्योर वाटर, ठीक है, जो कि 99.99% प्योर, मतलब है उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो, और उसी पानी का आप बर्फ भी बना लें। अब इन दोनों को आप, मतलब एक पानी लें प्योर वाटर, उसके अंदर बर्फ डाल दें और फिर उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि पानी का टेम्परेचर और बर्फ का टेम्परेचर इक्वलाइज हो जाए, ठीक है। उसके बाद इस पानी का टेम्परेचर एग्जैक्टली 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहेगा कि जब तक सारा का सारा बर्फ गुल ना जाए, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड आइस बाथ, ठीक है, इस चीज को आइस बाथ कहते हैं। सो अगर आपने कैलिब्रेशन के लिए हमने क्या करना होता है कि हमने एक नोन क्वांटिटी देनी होती है इनपुट के तौर पे, एक ऐसी क्वांटिटी देनी होती है जिस पे हमें श्योरिटी हो, जिस पे हम श्योर हो कि वाकई में अगर ये मैं इसको 0 डिग्री सी कंसिडर करूं तो ये वाकई में 0 डिग्री सी है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन इनपुट। अब नॉन इनपुट का एक तरीका तो ये है कि मैं एक और इंस्ट्रूमेंट जो कि ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट हो वो मैं इस पानी में लगा दूं और फिर इस पानी को मैं हल्का हल्का हीट करूं कि जब इस पानी टेम्परेचर जो है मिसाल के तौर पे या 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो कुछ भी चले, हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाए तो इसका मतलब है कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट जब मुझे 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है तो इसका मतलब है कि इनपुट इज 10 डिग्री सी, तो मैं यहां पर कॉलम की विड्थ ले लूंगा कि कॉलम मरकरी का कॉलम या स्पिरिट का कॉलम कितने लेवल तक पहुंच गया, तो उस लेवल को मैं 10 डिग्री, यानी ये जो है मिसाल के तौर पे ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाए, तो इस पॉइंट से यहां तक मिसाल के तौर पे 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर मिसाल के तौर पे दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, इसी तरह 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर और 10 डिग्री सी, 10 डिग्री सी कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 सेंटीमीटर, तो मेरे पास ये एक कैलिब्रेशन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है मैं इसको 10 डिग्री सी के बजाय मैं इसको दे देता हूं मिसाल के तौर पे 20 डिग्री सी। 20 डिग्री सी जब देता हूं, इनपुट वाटर टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सी, एज्यूम करें कि पानी का जो मरकरी या स्पिरिट का जो लेवल है वो इस 0 पॉइंट से, 0 रेफरेंस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर बुलंद हो गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज इनपुट जो है 20 डिग्री सी और आउटपुट पे जो है वैल्यू इनपुट 20, आउटपुट जो है 2 सेंटीमीटर, सो दिस इज आवर सेकंड कैलिब्रेशन पॉइंट। इसी तरह मैं अगेन पानी को और हीट प्रोवाइड करता हूं,
ठीक है, पानी को और हीट प्रोवाइड करता हूं, और जब मेरा ये एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट, जब मुझे रीड करके देता है कि पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, सो इनपुट इज 30 डिग्री सी, तो फिर मैं चेक करता हूं कि मरकरी या स्पिरिट का लेवल किस लेवल को पहुंच गया विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस वैल्यू। मिसाल के तौर पे एज्यूम करें कि वो 30 डिग्री 33 सेंटीमीटर को पहुंच गया, ठीक है। सो माय थर्ड कैलिब्रेशन पॉइंट will corresponds to this point 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो मेरे पास 3 कैलिब्रेशन पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब इन 3 कैलिब्रेशन पॉइंट्स को अगर आप गौर से देखें, सो द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज ए लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yeah. linear. So this Linear, very sir. good. So this is a linear. So I can connect all those calibration point with a line. Since I can do that, so I say that this device relation input and output. So what does this line do? This line relates input to output. Clear yahan tak? Yes, sir. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आउटपुट जो है, अब तो इंस्ट्रूमेंट तो अब कैलिब्रेट हो गया, अब मैं यही इंस्ट्रूमेंट लेता हूं और किसी एक अननोन, ये पूरा प्रोसेस, कैलिब्रेशन क्या चीज है, अभी मैं दोबारा, व्हाट इज कैलिब्रेशन? Calibration is a procedure in which we establish or develop input and output relationship for a instrument. यहां तक क्लियर है स्टूडेंट, और डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर अगर आपने तो लीनियर की बात कर दी ना, अगर नॉन लीनियर होता तो तब हमारे पास रीडिंग्स गलत आती, फिर क्या हमने ग्राफ वाला बनाया होता? नहीं, वो केस इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मुझे यहां तक बता दे कि इस बात की समझ आ गई व्हाट इज। जी सर, ठीक है, बिल्कुल, हम नॉन लीनियर ग्राफ डिस्कस करेंगे, नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट्स भी डिस्कस करेंगे। एट दिस पॉइंट मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर रहा हूं, ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ओके सर। अब ये इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट हो गया है, बिकॉज कैलिब्रेट होने का क्या मतलब कि वी हैव एक्यूरेटली एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि भाई अगर आउटपुट वैल्यू आ गई तो इसका क्या मतलब है कि इसका इनपुट क्या है। फॉर एग्जांपल अभी एक अननोन टेम्परेचर है, और यही वाला इंस्ट्रूमेंट जो कि मैंने कैलिब्रेट किया है, उसकी कैलिब्रेशन, बेशक इसके ऊपर मैंने स्केल ना लगाया हो, सिंपली मैंने इसको कैलिब्रेट कर लिया है, इसकी कैलिब्रेशन कर्व मेरे पास मौजूद है, और ये वो रेफरेंस 0 पॉइंट है, ठीक है। जब इस अननोन टेम्परेचर के अंदर मैं इस थर्मोमीटर को रखता हूं, तो इसके अंदर जो स्केल है, जो कॉलम है, लिक्विड कॉलम है, चाहे मरकरी है या स्पिरिट है, वो 0 पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर जाके रुक जाता है, ठीक है। अब ये 2.5 सेंटीमीटर की वैल्यू मैं अपनी कैलिब्रेशन चार्ट की मदद से मालूम कर सकता हूं कि ये आउटपुट वैल्यू किस इनपुट टेम्परेचर को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो मैं क्या करूंगा, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर। अच्छा, एक मिनट, ठीक है। सो ठीक है स्टूडेंट्स, Yes, sir. अभी शो हो रहा है। अब मैं क्या करूं कि दिस 2.5 सेंटीमीटर कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस लेवल, इसको मैं कैलिब्रेशन कर्व की मदद से आई कैन रिलेट दैट दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू, ये हमारे पास 20 है और ये 30 डिग्री थी, ये 20 और 30 के बिल्कुल मिड में आ रहा है। सो दैट मींस दैट 2.5 सेंटीमीटर आउटपुट corresponds to 25 degrees. Input temperature
टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सी। ठीक है, अब अगर ये इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड ना होता, अगर ये इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड ना होता, तो इसके आउटपुट वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या है, उसकी मानी क्या है, इसका क्या मतलब है? क्या आप ये मालूम कर सकते कि इससे आप इनपुट वैल्यू मालूम कर सकते थे अगर ये इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड ना होता? नो सर, हमारे पास वो स्टैंडर्ड नहीं वैल्यू नहीं। नो सर। ठीक है, और कैलिब्रेशन में हुआ क्या है? व्हाट डिड वी डू इन कैलिब्रेशन? सर हमारे पास इनपुट गिवन थी, उससे हमने आउटपुट हासिल कर लिया था। वो तो कर लिया था, लेकिन जरा अगेन वो जुमला प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? हमने कैलिब्रेशन में क्या प्रोसीजर बाय व्हिच वी डेवलप्ड रिलेशन इनपुट आउटपुट रिलेशन। वेरी गुड, सो वी डेवलप इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप फॉर एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब ये ग्राफ की मदद से भी आप ये कैलिब्रेशन का रिजल्ट आप ग्राफ की मदद से भी शो कर सकते हैं, आप टेबल की मदद से भी शो कर सकते हैं। टेबल की मदद से कैसे शो करेंगे कि भाई x ये इनपुट है और ये y जो है आउटपुट है। सो 10 डिग्री सी corresponds to 10 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, 20 डिग्री सी corresponds to 2 सेंटीमीटर, 30 डिग्री सी corresponds to 3 सेंटीमीटर। और अगर इसके दरमियान में कोई वैल्यू हो तो आप इंटरपोलेशन की मदद से मालूम कर सकते, क्योंकि ये लीनियर रिलेशनशिप है। अगर नॉन लीनियर होता तो फिर इंटरपोलेशन, यू कैन नॉट यूज इंटरपोलेशन। ठीक है, इसको एक तीसरे तरीके से भी हम कैलिब्रेशन रिजल्ट्स को नोट कर सकते हैं। वो कैसे होगा? वो होगा y is equal to mx plus c की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इस ग्राफ का c y इंटरसेप्ट वैल्यू क्या है? 0। स्लोप की वैल्यू क्या है? स्लोप की वैल्यू क्या है? 1 यस। ठीक है, सो इक्वेशन इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? दैट आउटपुट equal to input into y is equal to x into 1 into input plus 0। ठीक है, इनपुट डिग्री सी, आउटपुट सेंटीमीटर। अगर हमारे पास ये कैलिब्रेशन कर्व इस तरह के बजाय, अगर हमारे पास ये कैलिब्रेशन कर्व इस तरह के बजाय कुछ ऐसी कैलिब्रेशन कर्व होती, मैं आपके लिए ड्रा कर देता हूं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये स्लोप जो है 2 है या 0.5 है। ठीक है, तो लेट्स सपोज m इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, और ये हमारे पास इनपुट टेम्परेचर है डिग्री से, और ये आउटपुट लेवल है सेंटीमीटर में। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास इक्वेशन क्या होगी? नॉन जीरो होता है सर। हाँ, सी नॉन जीरो है। लेट्स सपोज दिस इज 0.5, लेट्स सपोज दिस इज 1.5। तो अब हमारे पास कैलिब्रेशन इक्वेशन क्या होगी? कैलिब्रेशन इक्वेशन हमारे पास होगी कि आउटपुट equal to इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू स्लोप जो है हमारे पास 0.5 है इनटू इनपुट इन डिग्री सी प्लस y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? प्लस 1.5। ठीक है, सो आपको अगर कोई एक इंस्ट्रूमेंट है और उसके साथ कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट गिवन है, सो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आपको टेबल की फॉर्म में भी मिल सकता है, आपको इक्वेशन की फॉर्म में भी मिल सकता है, और आपको जो है
ग्राफ की फॉर्म में भी मिल सकता है। Clear, students? Yes, sir. अच्छा, now let us read this slide. ठीक है? What is calibration? Calibration is a process in which we apply a known value input to a measurement system for the purpose of obtaining the system output value so that we can establish the input-output relationship. The known input value is called standard input value or reference value. Now, there is a static calibration and there is dynamic calibration. ठीक है? In this course, we will focus on static calibration only. ठीक है? For static calibration, a control independent variable, input is a control independent variable, output is dependent variable of calibration. Calibration procedure lists as best as possible all possible potential input, including extraneous inputs to the instrument to be calibrated, describe which will significantly affect the measurement of your instrument. का मसला आ रहा है, मैं रीजॉइन कर लेता हूँ। Let's suppose if this हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, मगर वो सर का प्रॉब्लम है, वॉइस लैग हो रहा था अभी। अब मेरी आवाज आ रही? यस सर। जी सर। स्टूडेंट्स? जी सर, आ रही है। आवाज आ रही है। चलो, let's do it again from here. स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। जी सर। यस सर। चलें। अच्छा, so let's move forward. ये बातें जो हैं, we will discuss these in these things, the extraneous variable, etc. We will discuss that. Some of the सर आपकी वॉइस दोबारा वो फ्लक्चुएट कर रही है सर। Okay. Now there is static calibration relationship between output and one input. All but the particular input are held constant. Only the magnitudes of the main input and the measurement output are important. ठीक है, we will discuss static and dynamic calibration. थोड़ा सा ये जरा हम डिटेल में जाते हैं calibration के, फिर देन मुझे याद दिलाएं कि मैं आपको static और dynamic calibration के बारे में समझाऊं. Then true value is the reference value. In most cases, we do not know the true value of the input. Measured by a more accurate instrument, 4 times better in terms of uncertainty than the instrument being tested. Dynamic calibration, dynamic variables are time or space dependent in both magnitude and frequency. Content, dynamic calibration determines the relationship between an input of known dynamic behavior and the measurement system output, applying either a sinusoidal signal or a step change as the input. अच्छा, चलिए मैं आपको पहले जरा समझा। देखिए, कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जो कि स्टैटिक सिग्नल होते हैं। तो अगर उन स्टैटिक सिग्नल्स को आप मेयर करते हैं, तो वो जो डिवाइस जिसकी मदद से आप मेयर करेंगे, उस डिवाइस की कैलिब्रेशन आप स्टैटिक कैलिब्रेशन करेंगे। स्टैटिक कैलिब्रेशन से मतलब यह है कि इस डिवाइस को कैलिब्रेट करते वक्त जो इनपुट सिग्नल था वो स्टैटिक था। कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं कि जो कि डायनामिक सिग्नल्स को मेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो वोल्ट मीटर है, अब अगर आप सब लोग को पता होगा कि जो आपका डीसी वोल्टेज तो आपके कांस्टेंट वोल्टेज है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज और टाइम, लेकिन आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी जो वोल्टेज वेव फॉर्म है वो तो कंटिन्यूसली चेंजिंग वेव फॉर्म है, ठीक है। अब कंटिन्यूसली चेंजिंग वेव फॉर्म
को मेयर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा उसकी कैलिब्रेशन आप स्टैटिक कैलिब्रेशन नहीं करेंगे, उसकी आप कैलिब्रेशन डायनामिक कैलिब्रेशन करेंगे। समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट्स? जी सर। ठीक है। डायनामिक कैलिब्रेशन से मुराद क्या है? डायनामिक कैलिब्रेशन देखें, अभी हमने क्या किया था जब हम स्टैटिक कैलिब्रेशन कर रहे थे, जो अभी हमने थर्मोमीटर का एग्जांपल देखा था, उसमें यह था कि हम इनपुट टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर एक खास लेवल तक, एक खास टेम्परेचर तक पहुंचा के वहां पे कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का टेम्परेचर पहुंच गया तो हम कोशिश करेंगे कि वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहे और हम इंस्ट्रूमेंट का आउटपुट रीड करें। ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक कैलिब्रेशन, यानी वैल्यू रीड करते वक्त आप इनपुट को कांस्टेंट रखते हैं। जबकि डायनामिक कैलिब्रेशन में क्या होता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होंगे कि जो कि डायनामिक वैल्यू को मेजर करेंगे। मतलब एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होगा, टेम्परेचर का इंस्ट्रूमेंट होगा, जो कि फास्ट चेंजिंग टेम्परेचर्स को मेजर करेगा। ठीक है। जैसे कि उसके अंदर टेम्परेचर होता है, इंजन जो सिलेंडर होता है, ठीक है, उसके अंदर कंबशन होती है, एक्सपेंशन, कंप्रेशन और एग्जिट होता है। ठीक है। तो इस दौरान ये एक सेकंड में कई दफा ये स्ट्रोक्स होते हैं और देयर इज ए वास्ट टेम्परेचर वेरिएशन और वेरी फास्ट टेम्परेचर वेरिएशन। अब इस तरह के डायनामिक टेम्परेचर वेरिएशन को मेजर करने के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को आप कैलिब्रेट भी डायनामिकली करेंगे। ठीक है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि depending on the rate of change of the input signal, input dynamic signal, कि अगर वो ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है या ज्यादा या स्लोली चेंज हो रहा है, आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी डिफरेंट। मतलब है, देखें, चलिए मैं आपके सामने दो सिग्नल ड्रा कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिग्नल जो है टेम्परेचर का, ठीक है, एक सिग्नल ये है, ठीक है। चलिए मैं एक वेव फॉर्म कंप्लीट ड्रा करता हूं, या 1.5 वेव फॉर्म। एक ये सिग्नल है और दूसरा ये सिग्नल है। ठीक है। अब अगर आप दोनों सिग्नल्स देख लें, दोनों सिग्नल्स के मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन फर्क किस चीज में स्टूडेंट्स? सही है, सेकंड वाले की फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रही है, वो चेंज हो रहा है बहुत। हाँ, रेट ऑफ चेंज ज्यादा या फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है? फ्रीक्वेंसी मींस रेट ऑफ चेंज इसका हाई है। अब अगर मैं एक ही इंस्ट्रूमेंट से ये दोनों सिग्नल मेजर करूं, एक ही इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, पहले सिग्नल का आउटपुट फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वो दे रहा है 10 डिग्री सी पहले सिग्नल के लिए। ठीक है, ये नंबर 1 है। दूसरा सिग्नल जब इसी इंस्ट्रूमेंट से मैं मेजर करूंगा तो हो सकता है वो 0.7 डिग्री सी दे रहा, सिग्नल नंबर 2, या 0.7 डिग्री सी या 7 डिग्री सी दे रहा। ठीक है। अब दोनों सिग्नल का मैग्नीट्यूड तो एक ही है। ठीक है, दोनों सिग्नल का मैग्नीट्यूड एक है, लेकिन चूंकि दोनों सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट पहले सिग्नल का मैग्नीट्यूड तो ठीक बता रहा है, लेकिन दूसरे सिग्नल की चूंकि फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसके मैग्नीट्यूड ये ठीक नहीं बता रहा। उसकी रीजन ये है क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये स्टैटिकली कैलिब्रेटेड है। ये स्टैटिक इनपुट के लिए तो ठीक है, लेकिन हाई रेट ऑफ चेंज सिग्नल के लिए ये सुटेबल नहीं है। अब अगर मैं ये दोनों सिग्नल्स मेजर करना चाहता हूं, एक्यूरेटली मेजर करना चाहता हूं, तो इसके लिए जो मैं इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा वो इंस्ट्रूमेंट जो है दैट विल बी सुटेबल फॉर डायनामिक सिग्नल्स, यानी चेंजिंग इनपुट सिग्नल के लिए सुटेबल होगा। इसका मतलब यह है कि दैट इंस्ट्रूमेंट हैज बीन कैलिब्रेटेड फॉर डायनामिक इनपुट सिग्नल्स। क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। इसकी रीजन क्या है? क्यों मैग्नीट्यूड कम क्यों आ रहा है? इसकी रीजन आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल के की कोर्स में इस बात का आपको पता चलेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्यों डायनामिक सिग्नल का मैग्नीट्यूड कम आ रहा है। ठीक है, सो वी विल डिस्कस, होपफुली वी विल गेट द चांस टू डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। नाउ
जैसे कि आप में से एक स्टूडेंट ने अभी थोड़ी देर पहले पूछा भी था कि सर ये रिलेशनशिप, हमारे केस में तो हमने लीनियर रिलेशनशिप अचीव की थी, वो ग्राफ हमारे पास लीनियर आ रहा था, उसकी इक्वेशन जो थी लीनियर थी, y = mx + c था। व्हाट इफ यू हैव ए रिलेशनशिप, मतलब ये आपके पास कैलिब्रेशन पॉइंट्स है, दीज आर द कैलिब्रेशन पॉइंट्स। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है जो मैं रेड डॉट्स नोट कर रहा हूं? यस सर। यस सर। ठीक है, अब अगर ये कैलिब्रेशन पॉइंट्स है तो देखिए इसमें कोई स्ट्रेट लाइन आप फिट नहीं कर सकते। कर्व फिटिंग अगर आप करेंगे सो कोई भी लाइन इन तमाम पॉइंट्स को एग्जैक्टली हिट नहीं कर सकती। हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि आप अप्रोक्सीमेटली एक कर्व इन तमाम पॉइंट्स में फिट करते हैं इस तरीके से दैट द एरर इज मिनिमम बिटवीन द कर्व लाइन, यानी द कर्व एंड द डेटा पॉइंट्स। ठीक है, इसके लिए अपना एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है विच इज कॉल्ड कर्व फिटिंग। आप नेट पे चेक कर सकते हैं, उसकी अपनी मैथमेटिकल इक्वेशंस है। अगर आपके पास इन ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, ये जो आपके पास ये जो अभी मैंने रेड डेटा पॉइंट्स नोट किए हैं, सो ये पॉइंट नंबर 1 उसकी x वैल्यू और उसकी y वैल्यू, सो पॉइंट नंबर, तो 1 पॉइंट की x वैल्यू और y वैल्यू, 2 पॉइंट की x वैल्यू और y वैल्यू, 3 पॉइंट की x वैल्यू और y वैल्यू। इस तरह से आप अपने पास नोट कर लें। फिर उसकी अपनी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है कि हाउ कैन यू फिट अ कर्व बिटवीन दीज पॉइंट्स। ठीक है, अब अगर इस इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन कर्व को आप देखें तो इसकी कर्व जो है वो लीनियर नहीं है, दिस इज अ नॉन लीनियर कर्व। तो इसका क्या मतलब है कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट लीनियर है या नॉन लीनियर है? स्टूडेंट्स, स्लोप हाँ, स्लोप ये से पता इंस्ट्रूमेंट चलता है हमें। स्लोप से हमें पता चलता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये तो स्लोप से तो हमें पता चलता है कि ये कर्व जो है नॉन लीनियर है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जिस इंस्ट्रूमेंट का ये कर्व है तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को लीनियर कहेंगे या नॉन लीनियर कहेंगे? नॉन लीनियर सर। नॉन लीनियर, हाँ, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट के इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो नॉन लीनियर है। अब आपके पास इसकी जो कर्व आएगी वो नॉन लीनियर होगी। फॉर एग्जांपल इसकी कर्व कुछ इस तरह से आ सकती है कि y आउटपुट इज इक्वल टू 3x² प्लस 9x प्लस 4, कुछ इस तरह की कर्व आ सकती है। या आपके पास कुछ इस तरह की कर्व आ सकती है 45x³ प्लस 9x² प्लस -2x प्लस 4। कुछ आपके पास सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, और थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल और फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल और 10th डिग्री पॉलिनोमियल, एक कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की आपको समझ आती है? व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स? सर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर एक मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, हम उसे कह देते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, और उसकी एक्सप्रेशन ये x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5, तो हम कहेंगे कि दिस इज ए थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर टर्म जो है उसकी पावर जो है 3 है, सो दिस इज अ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर 4x² प्लस 2x प्लस 1, this polynomial, let's call it p2 of x, now this is a second degree polynomial. It doesn't matter कि x square के साथ इस साइड पे क्या लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि इन तमाम टर्म्स में हाईएस्ट पावर टर्म कौन सी है, जो कि x square है, और जो चूंकि ये 2 पावर है तो हम इसे कहेंगे सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, और सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, यस सर, समझ गए। ठीक है। now if it is a curve, ठीक है, नाउ इफ इट इज अ कर्व, तो अब इसकी आपको पता है लीनियर, अगर आपके पास लीनियर इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी कैलिब्रेशन इंफॉर्मेशन को, कैलिब्रेशन डेटा को आप 3 फॉर्म में शो कर सकते हैं। 3 फॉर्म्स आपके पास कौन कौन से हैं? एक तो ग्राफ की फॉर्म है, ठीक है, एक आपके पास टेबल की फॉर्म है, और एक जो है आपके पास इक्वेशन की फॉर्म है। ठीक है, अगर नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें ग्राफ की फॉर्म में भी आप
कैलिब्रेशन इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं, और एक हायर डिग्री पॉलिनोमियल यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और हायर डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में भी आप उसकी कैलिब्रेशन डेटा को शो कर सकते हैं, लेकिन टेबल की फॉर्म में शो नहीं कर सकते. व्हाट्स द रीजन फॉर दैट स्टूडेंट्स? सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर लीनियर इंस्ट्रूमेंट है ना, तो उसकी कैलिब्रेशन डेटा को यानी उसकी इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को आप 3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट है उसके कैलिब्रेशन डेटा को सिर्फ आप 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ की फॉर्म में और इक्वेशन की फॉर्म में. टेबल की फॉर्म आप नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज नहीं करेंगे. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? क्योंकि जो चेंज आ रहा है सर वो कांस्टेंट नहीं है. वो कांस्टेंट नहीं है. तो आप जो है अगर आप टेबल की फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है, तो टिपिकली आपके लिए वो ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि इंटरपोलेशन आप आसानी से नहीं कर सकेंगे. मतलब आप शो कर सकते बट दैट इज नॉट यूजफुल. ठीक है. अब अगर हमारे पास नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, अब नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम क्या है? कैन एनीवन टेल मी? के चलिए मैं पहले आपको एक बात बता देता हूं. क्या है? वी ऑलवेज prefer a linear instrument. We always prefer a linear instrument. ठीक है? But sometime we will end up with an instrument that is non-linear. ठीक है? तो फिर हम non-linear instrument को के साथ चलिए पहले क्वेश्चन ये कि why do we want a linear instrument instead of non-linear instrument? सर नॉन लीनियर में एक्यूरेसी का मसला होता है. और सिंप्लीफिकेशन. किस चीज का मसला होगा? सर ये सारे पॉइंट्स उसी कर्व के ऊपर नहीं होते ना, मतलब एक्यूरेसी में मसला आएगा. हाँ नहीं, एक्यूरेसी में तो डेफिनेटली इशू होगा. इवन लीनियर में भी एक्यूरेसी का इशू होगा. डायनामिक कैलिब्रेशन दोनों करनी पड़ेगी उसमें. इंटरपोलेशन का आउटपुट की वैल्यू को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सर सही तरह, जिस तरह हम लीनियर नहीं हम कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं. देखें फॉर एग्जांपल ये कर्व मेरे पास आ गई है ना, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये आउटपुट हो गया, तो इस कर्व के ऊपर मैं डाल दूंगा और यहां पर आ जाएगा. ठीक है, मेरे पास इनपुट आ जाएगा. It will be fine. Yes, there will be some error of linearization, some error of interpolation, some error of curve fitting, लेकिन it will still be workable. Even देखें बाज़ औक़ात हमारे पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जिसका डेटा पॉइंट्स कुछ यूं होते हैं. अब इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को भी मैं इस लीनियर लाइन की मदद से रिप्रेजेंट करूं. तो अगर आप देखें देयर इज अ कर्व फिटिंग एरर, लेकिन स्टिल द इंस्ट्रूमेंट इज लीनियर इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, दिस द सिस्टम इज लीनियर इंस्ट्रूमेंट बट देयर इज कर्व फिटिंग एरर. देखें नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम यह है कि देखें ये वाली इक्वेशन यूज करना ज्यादा आसान है, सॉरी, या ये वाली इक्वेशन यूज करना आसान है. प्लस so on and 4. कौन सी इक्वेशन यूज करना आसान है? सर ऊपर वाली सर. ऊपर वाली आसान है डेफिनेटली. सो दैट्स द रीजन वी वांट लीनियर, क्योंकि ये हमारे लिए यूज करना आसान है. क्योंकि देखें हाँ, इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू डाल दूं, x की वैल्यू मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं. इस इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू मिसाल के तौर पे 2.5 सेंटीमीटर डालूं, इससे जरा आप x की वैल्यू निकाल के देना मुझे, क्या वैल्यू आएगी? कैलिब्रेशन मुश्किल होगी इसकी, यानी इससे इस कैलिब्रेशन को यूज करना मुश्किल है. दूसरी बात यह है कि इवन अगर कर्व के ऊपर हम यूज करें, ठीक है, कर्व के ऊपर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स लीनियर उसके मुकाबले में ये फिर भी जरा थोड़ा सा मुश्किल होगा. तो इसके लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं लीनियराइजेशन प्रोसेस क्या होता है? मतलब कोई नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट को हम लीनियर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. वो कैसे? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कैलिब्रेशन कर्व है. अगर आप ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है. सो दिस कर्व रिप्रेजेंट इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप फॉर एन इंस्ट्रूमेंट, देयरफॉर वी कॉल इट ए
कैलिब्रेशन कर्व। अगर आप इस कर्व के ऊपर देखें, दिस इज ए नॉन लीनियर कर्व। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आई कैन मेक दिस कर्व लीनियर। ठीक है, वो कैसे? मैं कहता हूं कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आई कैन रिप्रेजेंट दिस रेंज विद दिस स्ट्रेट लाइन। जरा विजुअली देख के मुझे बताएं, क्या ये मेरी अप्रोक्सीमेशन, लीनियर अप्रोक्सीमेशन ठीक अच्छी है या बुरी है? अप्रोक्सीमेशन है, ऑफ कोर्स, ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है। देयर विल बी सम एरर बिकॉज ऑफ लीनियर अप्रोक्सीमेशन। लेकिन जरा देख के मुझे बताएं कि जो इस रेंज के अंदर कर्व कर्व से जो वैल्यू आएंगी और मेरी लाइन की इक्वेशन से जो वैल्यू आएगी, कर्व की इक्वेशन से जो वैल्यू आएगी और लाइन की इक्वेशन से जो वैल्यू आएगी, इस इनपुट रेंज के अंदर वो दोनों इस इनपुट और आउटपुट रेंज के अंदर वो सिमिलर होंगी या नहीं, कर्व की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन दोनों के लिए? यस सर। नजदीक हो गए सर, ऑलमोस्ट। यस। हाँ, सिमिलर होंगी। ठीक है, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि वो एग्जैक्टली सेम होंगी, मैं ये कह रहा हूं कि वो अप्रोक्सीमेटली सेम होंगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स जी। अजानें हो गई है, अगर 10-15 मिनट का वक्फा मिल सके सर। अच्छा, टाइम क्या है सर? टाइम मुझे बताएं, मुझे क्लॉक नजर नहीं आ रही। 5:09 5:19। चलो ठीक है, बस मैं क्लोज करता हूँ लेक्चर। वैसे भी 2 घंटों के, हम दो घंटों की 2 क्लासें लेंगे अगर हम इसी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है? बस मैं 2 मिनट लेता हूँ, फिर कैलिब्रेशन के बाद और नहीं करेंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कैलिब्रेशन का? यस सर। सर ठीक है, नाउ दिस प्रोसेस कॉल्ड लीनियराइजेशन। और लीनियराइजेशन का जो टॉपिक है वो आपके बुक में मेरे ख्याल में मौजूद है, जरा उसको आपने पढ़ना है। लीनियराइजेशन के प्रॉब्लम भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स से सिंपल इसकी इक्वेशन है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है लीनियराइजेशन की, कि हमारे पास ये एक लीनियर लाइन इक्वेशन आ जाएगी, y1 इज इक्वल टू m1 x1 m1 x plus c1. Now this corresponds to range of, let's suppose, 2 to 20 to 30 degree C. तो मैं कहूंगा कि this equation is only valid for input range of 20 to 30 degree C, या आउटपुट रेंज ऑफ मिसाल के तौर पे 2 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर के लिए ये सिर्फ वैलिड है। अब ये जो दूसरा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ना उसके लिए फॉर एग्जांपल चलिए इस पोर्शन के लिए एक और लीनियर लाइन होगी, which is this linear, and this linear line is only applicable for this range. समझ आ रही है इस बात की आपको स्टूडेंट्स? यस सर। मेरे कहने का मतलब यह है कि पूरी की पूरी कर्व को आप एक सिंगल लीनियर लाइन की मदद से रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप कर्व के छोटे छोटे सेगमेंट्स को मल्टीपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस की मदद से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ आ रही है इस बात की? यस सर। समझ आ रही है। सो अगर आपके पास एक नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट है और नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट की पूरी रेंज को आप लीनियराइज नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे कि नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट को छोटे छोटे रेंजेस में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उन छोटे छोटे रेंजेस को लीनियर लाइंस की मदद से, डिफरेंट लीनियर लाइंस की मदद से आप रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड लीनियराइजेशन ऑफ ए नॉन लीनियर कर्व। समझ आ रही है इस बात की? यस सर। यस सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन है? फिर मैं क्लोज कर रहा हूं आज के लेक्चर को। नो सर, ये रिकॉर्डिंग पर शेयर कर ले काइंडली। ठीक है, रिकॉर्डिंग शेयर हो जाए। मैं 1 मिनट जरूर जाता हूं। सर आपकी आवाज कट रही है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। ये किया है जो हैंड रेज कर रहे हैं। अटेंडेंस तो नहीं हो रही। मेरा ख्याल से ये अटेंडेंस है। शायद हाँ अटेंडेंस होगी शायद। जो प्रेजेंट है वो सारे ही कर लेना। तो मैं तो भाई के जो आईडी से लॉगिन हूँ उनके लैपटॉप में, मैं क्या करूँगा इज़ाद? अब आपका उसका रेज हैंड्स नहीं है उसमें? नहीं ये मेरे भाई मेरे को ख्याल में, एक्सक्यूज मी यार, ये अटेंडेंस नहीं है, ये जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं ये यही ऑप्शन है, हाथ उठा लो सिर्फ। नहीं वो सर कुछ कह रहे थे लेकिन ये उनकी तो आवाज कट गई ना दरमियान में, तो अभी पता नहीं कि वो क्या सर कह की रहे आवाज थे। कट गई, अटेंडेंस कैसे लगाई जाएंगी यार? सर ने कहा कि चले मैं नहीं होगी, हेलो अटेंडेंस नहीं हेलो होगी। हेलो हेलो और जालिम सब लोगों को अटेंडेंस की यस पड़े, सर, जाओ यस सर, अटेंडेंस पढ़ो। यस सर। सर बोल रहे हैं मेरे को। सर इधर है। आवाज सुनाई दे रही है? यस सर अभी सर आवाज आ रही है बिल्कुल? हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। जी सर। सर आ यस रही है सर। आवाज? यस सर। यस सर आ रही। नो सर आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है सर, चले कट मैं रही है। मैं सर आपकी आवाज फिर कट रही है। हाँ चले आपकी आवाज जा सकते हैं बस। ठीक। जी सर। हेलो हेलो यस सर आवाज आ रही है सर जी। यस सर अभी आवाज नहीं हुआ। यस सर आवाज राजी सर। अच्छा attendance होगी। सर आवाज नहीं आ रही। वेडनेसडे 9 o'clock को हम क्लास देंगे, ठीक है? यस सर ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके ओके सर। सर। ओके सर। ओके हेलो थैंक यू सर। ओके सर। चलो जिसने नहीं सुने वो सर कह रहे थे कि हम वेडनेसडे हाफिज 9 हाफिज। o'clock सुबह हम 9 o'clock को क्लास लेंगे। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। तो थैंक यू अभी फॉर सारे चले जाएं। कोऑपरेशन। कमरा ना अलग कमरा ना अल्लाह तसाऊ हाफिज सर। बकरा की तसा करा तसा गड़बड़ के अटेंडेंस वाला से नहीं यार गाने अटेंडेंस नहीं वालों हुई, वो सर का उधर है। इलाका शर्मिदलिया बंद करा कैमरा, बंद का मुंगता पता रहता है उसे बंद कर शर्मिदलो, रिकॉर्डिंग बंद यार के वही रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रवाने ऑन बंद के है। शाबा चुपचाप 35 रुपये सर दे के अलग अलग रिकॉर्डिंग फिल्म स्टार्ट हाउंडे देखा ले दे जल बच्चे 40 रिकॉर्डिंग स्टार्ट चुप शी जालिम बच्चों। कांडी चुप हो जा, रिकॉर्डिंग शुरू है। हां मना सर दे बस जेब रखी कैसे रिकॉर्डिंग को बस स्टॉप शो करना, बस खत्म शो। सर पगे हुए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है वीडियो हम अला कमुन तरह से जमा वाला था शबे खजा मुंतम बकी दराव दुआ दराव करोरा तब दुआ होगा बस के बन के शबे राजे का सो ऑनलाइन जमा कई रोरानो, राजे का सो ऑनलाइन जमा कई।